Hello guys, welcome to Online Web Tutor presented by profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue Js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 47. In this video session guys, we will discuss about URL parameters in route in Vue Js application. And also guys, if you're a beginner to this channel then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue Js tutorial. So basically guys, हम अपने previous video sessions में guys routing के बारे में different concepts के बारे में discussion किया हुआ है. Okay, so now the next that we have to discuss about the URL parameters. Okay, so URL parameters, so basically what is parameters in URL? So basically guys, if you go to browser and now this is the page that we have developed so far. यहाँ पर हमने कुछ tabs बनाया like about, so blog, services and contact. Okay, so right now guys, inside this so blog, here we have no contents instead of simple static message. ओके इस पेज के अंदर गाइस हम सो ब्लॉग पेज के अंदर हम इस फेक जेसन रेस्ट एपीआई के थ्रू सारे पोस्टों को रीड करने वाले हैं और इस पेज के अंदर उन्हें हम रेंडर करने वाले हैं. ओके, सो इफ आई स्क्रॉल डाउन, so here we have post section. Okay, so basically guys, http get method use करके हमें fake JSON REST API को use करना होगा. And now by the help of get method we actually call this URL and read all the posts of this page to all blogs of our VueJs application. So just back to fake JSON REST API. So basically guys, ये वो URL है जहाँ पर हमारे पास सारे पोस्टों की डिटेल है. ओके, अगर हम इंडिविजुअल पोस्ट को रीड करना हो, सो इफ आई ओपन इन डुप्लीकेट टैब एंड लेट्स से दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉल्ड थर्ड आईडी डिटेल. ओके, सो स्लैश एंड वी हैव टू पास द पैरामीटर्स. ओके, हमें अब यूआरएल में पैरामीटर्स पास करना होगा टू रीड अ स्पेसिफिक पोस्ट. ओके, सपोज हम 3 पोस्ट को रीड करना चाहते हैं, सो बेसिकली वी हैव टू पास द आईडी कॉल्ड 3 राइट हियर इन द यूआरएल. सो हियर 3 इज कॉल्ड द यूआरएल पैरामीटर. ओके, सो जस्ट प्रेस एंटर. And now we have the detail of post ID called 3. Okay, so if I just replace with 10, now we have the detail of ID of post 10. Okay, so basically guys, this is called the parameters in URL. Okay, so इस तरीके से guys all blog space पे हम सारे blogs को render करने वाले हैं और उनमें हम router link यूज करके guys हम किसी individual post पे क्लिक करेंगे. so क्लिक करते ही हम URL के थ्रू parameters को read करेंगे और उन parameter के जरिए हम individual post को render करेंगे. so just back to slides. So theoretically concept guys हम समझ सकते हैं that is called this is parameter in URL. अगर मैं इसे remove कर दूं, this page actually gives all details about our blogs. Okay, अगर हमें individual blog के बारे में information get करनी हो, so we have to pass the ID of that. Okay, so here is called 12 is the ID of that post. So just back to editor. So this is our VueJs application and now here we have a file called route.js जहाँ पर हमने सारे routes को define किया हुआ है. Okay, and now this is the page called so blog. Okay, so if I open so blog, so इस पेज पे guys हम सारे पोस्टों को रेंडर करने वाले हैं. Okay, by using this fake JSON REST API. Okay, so just scroll down. Now here I'm going to define a function and that is lifecycle function called created. ओके, इस क्रिएटेड के अंदर गाइज हम http रिक्वेस्ट यूज करने वाले हैं. ओके, सो दिस कॉल्ड http get method. inside this get method the first parameter that we are going to pass called the URL. okay, so just copy this URL and paste here. okay, next हम promise यूज करेंगे. so now inside this then function just pass function and now basically this function gives you the response from the server. okay, and now we are going to use this response variable. okay, so just copy. so अगर मैं इसे console करूं, so let's say console.log response, let's say response and just save this file. so just save this file, go to browser and now if I inspect that, go to console, just reload this page once more. Now here as we can see that this is the response guys जो कि हमने fake JSON REST API का URL को hit किया है. okay, so if I open this response, now inside this response हमारे पास एक body parameter है and inside this body parameter we have called 100 objects inside this array. okay, so if I go to documentation and now if I scroll,
So we have called 100 details or 100 posts inside this post section. ओके सो बेसिकली गाइज ये है वो सारे डिटेल्स जो कि हमने फेच किया हुआ है बाय यूजिंग दिस http गेट मेथड. ओके सो बेसिकली गाइज हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कशन किया हुआ अबाउट दिस http मेथड और हम इसे कैसे यूज करते हैं. Okay, so basically to use this http method, first we need to install a package called Vue resource. Okay, after installing that we have to import and use inside our main.js file. So just back to soblog.vue component and now इसके बाद guys हम created method के अंदर define किए हुए and basically this is a lifecycle method जो कि रन होती है जब भी हमारी soblog.vue component initialize होती है. Okay, so just back to this data object. यहाँ पर गाइस हम एक पैरामीटर डिफाइन करने वाले सेल ब्लॉग्स. इनसाइड दिस ब्लॉग बेसिकली इट इज एन एम्प्टी एरे. ओके सो बेसिकली हम उसमें डिफाइन करने वाले हैं सो लेट्स से दैट दिस डॉट ब्लॉग्स एंड बेसिकली दिस डॉट ब्लॉग्स रिफर्स टू द डेटा ऑब्जेक्ट कॉल ब्लॉग प्रॉपर्टी. ओके सो इनसाइड दिस डॉट ब्लॉग्स लेट्स रिस्पॉन्स दिस इज रिस्पॉन्स फ्रॉम फिग जेसन रेस्ट एपीआई डॉट बॉडी. ओके डॉट बॉडी इन द सेंस ऑल 100 ऑब्जेक्ट्स actually stored inside this variable. Okay, so 100 objects हमें नहीं चाहिए, just we want out of 10 records from these 100 objects. Okay, so basically हम use करने वाले call slice method. So we are going to take only 10 records. Okay, starting from 0 index and total number of records we want something called 10. Okay, so basically guys हमने अपने blogs variable को initialize कर दिया हुआ, so just go up. Now next we have to call that blogs. Okay, so let's say that div. Inside this div let's say that h3 tag. Inside this h3 let's say that blog and we have a property. अगर मैं इसे open करूँ so we have 4 properties called body, id, title and user id. Okay, so just we are going to call blog. Sorry, it's not blog. Basically guys हम v4 directive use करेंगे to get iterate over all the 10 records that we actually fetched from this result. Okay, so we are going to use called v4 directive. Okay, so v4 directive use करके guys हम इस blocks के 10 records पे हम iterate करने वाले हैं. Okay, so let's say that blog in blogs. Okay, and this blogs refers to this variable. Okay, so let's say that blog dot title and blog.title refers to this title. Okay, so again I'm going to define a paragraph. Let's say paragraph. Inside this paragraph let's say that blog dot let's say body and this body refers to this body here. Okay, so just if I save this file, go to browser, just and now as we can see that guys this is a response actually that we have made. Okay, here is the title and here is the content. ओके सो बेसिकली गाइज हमने अपने soblog.vue कंपोनेंट पे अपने 10 रिकॉर्ड्स को हमने रेंडर किया हुआ है जो कि हमने http गेट मेथड के थ्रू फिग जेसन रेस्ट एपीआई को रीड किया हुआ है. ओके सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक द हाइपरलिंक ऑफ दिस टाइटल. हम क्या करने वाले हैं, हम एक हाइपरलिंक क्रिएट करने वाले हैं अपने इस टाइटल पे सो दैट कि अगर हम इस टाइटल पे क्लिक करें सो क्लिक करते ही we are going to hit this URL. Okay, after hitting this URL actually we will take the individual details of that post. Okay, हम individual post को read करेंगे इसके click पे. Okay, so just back to editor. So I am going to make a router link. So let's router link, just close this tag. So let's router link. Okay, so inside that router link just paste it here. So इस टैग के अंदर गाइज हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है समथिंग कॉल्ड टू एंड बेसिकली इट विल डिनोट द पाथ. ओके सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टेक कॉल्ड ब्लॉग एंड हियर इज समथिंग कॉल्ड आईडी. ओके व्हाट एक्चुअली वी वांट दैट व्हेन वी क्लिक ऑन द टाइटल, जैसे ही हम टाइटल पे क्लिक करें वी वांट यूआरएल समथिंग लाइक दैट. ओके जहां पर हमारी पोस्ट आईडी होगी सो दैट कि इस पोस्ट आईडी को रीड करके हम नेक्स्ट पेज पे इसकी इंडिविजुअल डिटेल को निकाल पाएं. ओके सो वी हैव टू पास द आईडी हियर. So before binding ID we have to use a directive called vbind. Okay, vbind क्यों? Because we are going to bind our ID with these two attribute. Okay, so vbind to and now we have to use called the ID. Okay, so just get rid of that. मैं ऐसे remove कर दूंगा. Within single quotes just paste the URL, concatenate with the blog.id and this blog.id refers to, अगर मैं जाऊँ browser पे
scroll up, and basically it will denote the id value here. Okay, so blog.id. Okay, so if I save this file, just go to browser, reload this page, and now as we can see that all blogs is now empty, and it's because guys हमारे internet speed थोड़ी slow है, and we are using call live URL of this fake.json REST API. ओके, सो हम देख सकते हैं गाइस कि हमने अपने सक्सेसफुली हमने 10 रिकॉर्ड्स को रीड कर लिया हुआ है. नाउ वी हैव क्रिएटेड अ hyperlink or router link inside this title section. Okay, so if I inspect that, so just scroll down, and here is our URL called blog/and1. This is the ID of this post. Okay, scroll down, inspect that, and now this is blog/2, and this is the post ID of this individual post id2. So basically guys, हमने इस वीडियो सेशन में guys हमने अपने 10th रिकॉर्ड्स को रेंडर किया by using this fake.json REST API. साथ ही साथ हमने राउटर लिंक क्रिएट किया. नेक्स्ट वीडियो सेशन में guys इस पैरामीटर को रीड करके मीन्स इन द ब्लॉग ID that we have passed, इस ID को यूज करके guys हम इंडिविजुअल पोस्ट को रीड करने वाले हैं. साथ ही साथ हम अपने route.js में गाइस एक और राउट क्रिएट करेंगे सो दैट कि हम आईडी को रीड कर पाएं. बेसिकली सो फार वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी राउट टू रीड आवर आईडी वेरिएबल. ओके, और बेसिकली हमने आईडी पैरामीटर पास किया हुआ अपने यूआरएल में सो दैट वी हैव टू मेक अ एक्स्ट्रा पाथ फॉर दैट. So basically guys, I think that by the help of this video session we actually understood about few concepts about URL routing in Vue.js application. So in our upcoming videos guys, means on part 48, we will read the parameter from the URL. Okay, so in this video session guys, if you have any doubt then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.